Hi, I hope you're all doing well. Today I'm back with another video, and in this one we are going to cover the topic of congruence and similarity. As per CIE, this is 4.1, and my resource book that I'm going to use will be New Syllabus Mathematics Book 2. Alright, so in order to understand how does congruence and similarity work in questions, we first need to know what these words actually mean. Congruence means two figures are known to be congruent if they have exactly same shape and same size. They can be mapped onto each other under translation, rotation, and reflection. Very easy example of congruent figures can be a person standing in front of a mirror or an object kept in front of a mirror. Though the image formed in the mirror is a reflection, however, the shape and the size is exactly same. Hence, it can be said that both the actual and the image formed are congruent to one another. Congruence is a property of geometric figures. Here you can see we have these arrows, और अगर इन arrows को आप बड़े गौर से देखो तो इनका size, इनका shape exactly same है. It's just one of them are facing towards the right side, the other ones are facing towards the left side. उनको reflect कर दिया गया है, उनकी directions को change कर दिया गया है using translation, rotation, reflections, right? Otherwise, they are exactly the same in size, same angle, same shape. And the pattern that they're forming is known as tessellation. Same goes for this one. Isme bhi, if you look at the small unit over here, ये triangular shaped figure है, and a lot of pieces of the same size and same shape are put together in order to form this pattern. Now, while looking at these A, B, C, D, E rectangles are sare, and some of them are the congruent ones, and maybe one or two of these are the non-congruent ones. So I would ask you to please pause it a while and maybe write down the answers and see which ones are congruent and which ones are not. Do the same thing for the triangles as well, F, G, H, I, J. All right. In the first set, A, B, C, and D are congruent. If you look at them very carefully, A, B, C, and D बिल्कुल congruent figures हैं. C वाला, however, vertical form में चला गया है, but even then it is occupying the same space, same length, same breadth, and it is the same as A, B, C, and D. However, E वाला थोड़ा छोटा है, though the shape is same, लेकिन उसका size क्योंकि छोटा है, hence we cannot call it to be a congruent one. और triangles में से F, H, and I. So F, H, and I are the congruent ones. J वाला right angle triangle है, different from the ones in the set of 3, and G वाला भी बहुत बड़ा है, which is not the same as the ones in congruent. ठीक है, अच्छा. Now I'm going to show you a few questions और हम उनको साथ साथ solve करेंगे, and let's see how does it go about. और मैं साथ साथ समझाती चली जाऊंगी. All right, this is my first question over here. No, so sorry. This is my first question over here. A, B, C, and D is a quadrilateral, and दूसरी side पे W, X, Y, and Z is another quadrilateral. The question here is telling us, if you want, you can take a screenshot of this, maybe for later use. All right, I'm going to squeeze it out a bit because I'll need some space to work on. All right, the question is saying, given that A, B, C, and D is congruent to W, X, Y, and Z, copy and complete each of the following. अच्छा, इन क्वेश्चंस में ना फर्स्ट स्टेप हमेशा ये किया करो कि देखो A, B, C, D का मतलब है कि A वाला जो पॉइंट है इट्स द सेम एज W वाला पॉइंट ओवर हियर, देन द पॉइंट B is the same as point X, so B is the same as X, then the point C is the same as Y, and the point D is the same as Z. जब पहले स्टेप में हम ये कर लेते हैं ना तो उसके बाद it's very easy to locate the angles and everything.
The question is telling you angle ABC is the same as angle WXY. So ABC, which means it's 80 degrees की बात हो रही है, and angle WXY, which means this angle. The question has already told you कि ये दोनों angles equal हैं. अगर equal हैं and if this is 80, obviously this is also 80 degrees. So you simply have to write down the answer 80 degrees. Come on to the next one, XYZ. Angle XYZ, which means ये 60 डिग्री वाला. हमने पहले फिगर आउट किया था कि ये जो पॉइंट Y है इट इज द सेम एज पॉइंट C. Hence we can say अगर यहाँ पे 60 डिग्री एंगल है तो यहाँ पे भी 60 डिग्री एंगल होगा, which means BCD is the same as XYZ. So you can write angle BCD is the same and इसकी मेजरमेंट में आप लिख सकते हो 60 डिग्रीज. फिर वो बोल रहा है साइड AD. So A and D. We already know कि point A point W है and point D हमारा point Z है. So this means if AD is 2, WZ is the same and it also measures 2 centimeters. Then WX, which is this longer side over here, 4 centimeters. We know हमारा point W is the same as point A and हमारा point X is the same as point B. Hence we can also say कि यहाँ पर भी 4 centimeters आ रहा है. So the side AB is the same as 4 centimeters and that is it. इतना difficult है नहीं ये topic, बड़ा easy सा छोटा सा topic है. And all right, let's do another question for this one. Okay, इसके अंदर question हमें बोल रहा है are the following pairs of triangles congruent? If so, explain your answer and write down the statement of congruence. If not, explain your answer. Point A, B and C, and here we have triangle Q, P and R. अब हमें नजर आ रहा है कि ये 3 centimeters, इधर भी 3 centimeters. Here we have a 3.68. Here also we have a 3.68. Here we have a 3.39 and here also we have a 3.39, which means sides तो सारी same है. अब angles check कर लेते हैं. एक 70 degree angle, एक 70 degree angle. We have a 60 degree here. यहाँ पे भी एक 60 degree है. This is a 50. This is a 50. You can say as all angles are equal and all sides are also equal, hence the two are congruent. As simple as that, right? Let's look at another example. Okay, let's look at these triangles. यहाँ पे the question has 5 centimeters given for DE over here and ये हमारा right angle है. This is point F. Next triangle में S है, T है and we have a point U. Over here we can see there is an 80 degree and this one is an isosceles triangle. In order to compare हमारे पास चलो side 5 centimeter 5 centimeter same है. The rest two sides हमें नहीं पता दोनों की, छोड़ दो. लेकिन this is an isosceles, which means if this is 5, here also we have another 5 centimeters. And if this is 80 degrees, this is also an 80 degrees. Now in order to figure out this angle S, I can simply add both the 80 degrees and subtract them with 180 क्योंकि हमारा triangle का sum 180 degrees होता है. So 80 and 80 gives me 160. 180 minus 160 will give me 20 degrees. 20, 80 and 80. None of them is a right angle, which means the two triangles are non-congruent. So your answers here simply can be not congruent. And that is it. Right? So that is how you compare the congruency of different shapes. Let's look at the last question for congruence. उसके बाद हम similarities पे move करेंगे. Alright. The question here is telling you that in the figure, triangle ABC is same as triangle CED. Okay. Given that angle BAC is the same as 20 degree, I'm going to squeeze it out a bit because I want the entire question together. आप अगर चाहो तो please screenshot ले लो. Okay.
So we can see that the angle BAC over here is a 20 degree angle. हमें ये नजर आ रहा है, ठीक है. फिर एंगल CDE 60 है, ये भी हमें पता चल गया. AB की लेंथ उसने हमें 8 बता दी, 8.8 है, and CD is 10. The question wants me to figure out angle ECD, E, C and D, which means ये वाला angle. First step in questions का मैंने पहले भी बताया था. Point A is the same as point C in the other triangle. Point B is the same as point E in the other triangle, and point C is the same as point D in the other triangle. So now मुझे figure out करना है point angle यहाँ पे ECD, okay, ECD, and I know that the point C over here in this triangle is the same as point A over here in the first triangle. तो अगर ये 20 degrees है तो फिर ये भी 20 degrees होगा. Hence I can simply write that angle ECD is same as angle BAC, which is equals to 20 degrees. So ये मेरे part 1 का answer was this simple. Let's move on to part 2. The part 2 wants me to figure out angle ECB. Angle ECB, which is this triangle. Okay. So here I know that इस वाले triangle का जो point C है, it is the same as point D in the other triangle. अगर ये point D मेरा 60 degrees था तो यहाँ पे भी मेरे पास एक 60 degrees आ जाएगा, which means now I can write that my angle ECB is the same as angle EDC, which is a 60 degrees. That is it. In questions के अंदर we are simply going to compare the angles looking at the figures. फिर कह रहा है angle ABC. So angle ABC, which means ये third वाला angle. So now if 20 is there, 60 is there, ये वाला angle figure out करना है. So simply apply the property of triangle, which means 180 is the total. 60 और 20 को plus करो, you will get 80. 180 minus 80 will give you angle ABC as 100 degrees. That is it. The question wants you to figure out the length of AC. AC, ये वाली length. हम figure out कर रहे हैं AC. So अगर A point मेरा C है, the other one, and C point D है, which means CD is the same as AC. तो हम लिखेंगे point 4 में that my AC is the same as CD of the other triangle, which means 10 centimeters is my length. Then the question wants you to figure out AE, which means ये छोटू सा जो part है ना, ये figure out करना है. अब हमें ये तो पता है कि A till C पूरा का पूरा 10 centimeters. हमें figure out करना है कि CE कितना है. CE हमारा point है AB वाला. AB 8.8 है तो फिर यहाँ पे CE भी मेरा 8.8 है. तो मैं क्या करूँगी to figure out that small part? I am simply going to subtract 8.8 from the 10 centimeters and I'll get my final answer as 1.2 centimeters, and that is it. Then the question wants you to figure out what can you say about the lines A, B and DC. A, B and DC. Okay, you can only say that these two lines are not congruent to one another because one of them is a 10 centimeters, the other one is 8.8 centimeters, and that is it. All right, so let's look at similarities now. Similarities होती क्या है, पहले हम जरा उस पे फोकस कर लेते हैं, उसके बाद we will solve questions of similarities. Okay, similarity. Two figures are similar if they have exactly the same shape, however, not necessarily the same size. Here you can see A, B, C, D, E, and F was a hexagon, and this hexagon was enlarged to form another hexagon. A complement, B complement, C complement, D complement, E complement, and F complement उसके points के नाम थे.
However, ये इंक्रीज तो हो गया है, लेकिन ये जो एंगल्स होते हैं ना, दिस एंगल A over here and this angle A over here has to be equal. This angle B over here and the other angle B over here is also supposed to be equal. So if two polygons are similar, then they have to have all the corresponding angles are equal, which means कि इसके अंदर के angles कभी भी different नहीं होंगे. अगर angles change हो जाएंगे, then the figure will not be known as a similar figure. And the second property is all the ratios of the corresponding sides are also equal. मतलब कि साइज जरूर चेंज हो रहा है, लेकिन उनके चेंज होने का रेशो, चेंज होने का स्केल चेंज नहीं होगा, सेम होगा. ठीक है. All right. We will do a few questions. उसके अंदर आपको समझ आ जाएगा कि how is this working out. So let me just bring you two questions now. All right. There we go. Now if we look at this, we can see that is ABC, triangle ABC similar to the triangle PQR? हमें ये figure out करना है, yes or no. अगर सेम होंगे तो इसका मतलब है या तो एंगल सेम होगा या तो फिर साइड्स का रेशियो सेम होगा. Now you can see यहाँ पे 70 degrees और ये 70 degrees, ये तो सेम है. And this one is a 60 degree, this one is a 49. एक एंगल यहाँ पे अननोन है और एक एंगल यहाँ पे अननोन है. तो हम पहले फिगर आउट कर लेते हैं कि ये जो थर्ड एंगल अननोन है दोनों में, ये कितना है. फॉर द फर्स्ट वन 70 एंड 49, थर्ड एंगल विल बी, इन दोनों को ऐड कर दो एंड सब्ट्रैक्ट इट विद 180. So the answer that you will get is going to be 70 plus 49 will give you 119, and when you subtract 119 from 180, आपका आंसर आ जाता है 61. So this means the third angle over here is a 61 degrees. Now if this is 61 और अगर इन दोनों को ऐड किया और फिर 180 से सब्ट्रैक्ट किया तो 61 आया, ऑब्वियस है कि जब हम 70 और 61 को ऐड करेंगे और 180 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर आंसर यहाँ पे हमारे पास 49 degrees आएगा. This shows that all three angles are same. So if the all three angles are same, the shape is supposed to be similar. So yes, we can say that these two triangles are similar. एक और एग्जांपल आ गया. इस एग्जांपल में हमें एंगल्स नहीं पता, हाउएवर हमें साइड्स की लेंथ पता है, तो हम साइड्स की लेंथ को कंपेयर कर लेंगे. Is the triangle DEF similar to triangle STU? तो ट्रायंगल D का पॉइंट S सेम है, E के साथ T सेम है और F का पॉइंट U सेम है. तो कैन आई से दैट DE अपॉन ST, ये दोनों सेम आ गया. उसके बाद इनका रेशो शुड बी इक्वल्स टू द रेशो ऑफ EF ओवर TU, ये दूसरा वाला आ गया. और फिर थर्ड वाले में DF should be the same as SU. अच्छा, यहाँ पे और कोई मसला नहीं होता. यूजुअली बच्चे जो है कंफ्यूजन ये क्रिएट करते हैं कि अगर मैंने पहले DEF which means I'm using this first triangle first, अगर मैंने टॉप पे फर्स्ट ट्रायंगल लिखा है तो मैं तीनों ही रेशियोज में फर्स्ट ट्रायंगल टॉप पे लिखूंगी और सेकंड ट्रायंगल की वैल्यूज नीचे लिखूंगी. इफ आपने पहले वाले रेशो में फर्स्ट का ऊपर लिखा, सेकंड का नीचे लिखा और सेकंड वाले में फ्लिप कर दिया तो आंसर गलत हो जाएगा, रेशोज गलत आ जाएंगे एंड यू दिस माइट लीड यू टू गिविंग अ रॉन्ग आंसर. So now DE is how much? DE over here is 8. So we'll write 8 over ST is 12 equals EF is 6 upon TU is 9 equals DF is 4 and SU is 7. अब इनके रेशियोज को हम कंपेयर करते हैं सिंप्लीफाई करके. इन दोनों को टेबल ऑफ 4 से सिंप्लीफाई कर दो तो 2/3 मेरा आंसर आ जाता है. देन द नेक्स्ट वन, इन दोनों को वी कैन सिंप्लीफाई बाय द टेबल ऑफ 3. अगेन 3 2s are 6 and 3 3s are 9, so 2/3, सेकंड रेशियो सेम. Oh, however 4/7 इसको सिंप्लीफाई हम कर नहीं सकते, so we'll just write 4/7. We can see that the first and the second ratio are same, however this third ratio is not same. Hence इसका मतलब है कि these two triangles are non-congruent.
आई होप आपको ये समझ आ गया हो एंड आई वुड सजेस्ट ये रेशो कंपेयर करने का मेथड ही सीख लो तो ज़्यादा अच्छा होगा, बिकॉज ये बड़ा इजी सा मेथड है और इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, बड़ी इजीली सॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, नोटिस करना, मैं यूजुअली जो मेथड सिखा रही होती हूँ, आई यूजुअली गो फॉर मेथड्स जो कि ना ही सिर्फ उस पर्टिकुलर टॉपिक और उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यूज़ होंगे, हाउएवर वो मेथड्स आपके आगे भी किसी भी चीज़ में यूज़ बड़ी आराम से हो जाते हैं मल्टीपल टॉपिक्स में। उसका रीज़न ये होता है कि O levels in Cambridge does not believe in rote learning, rather logical thinking ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, कॉन्सेप्चुअली समझ आना चाहिए। तो कॉन्सेप्चुअली समझने के लिए हमें बहुत सारे मेथड्स को रटना ज़रूरी नहीं होता, तो आई गो फॉर लॉजिकल वंस। चलो, लेट्स ट्राई डूइंग दिस वन। द क्वेश्चन इज सेइंग, इसका अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो बिकॉज आई एम गोइंग टू स्क्वीज इट आउट अ बिट। Given that triangle ABC is similar to triangle PQR, calculate the values of the unknowns। तो क्वेश्चन है, मैं ये तो बता दिया कि ये है ही सिमिलर, हमें फिगर आउट करनी है वैल्यूज ऑफ द अननोन। अब अननोन वैल्यूज क्या है, एक यहाँ पे ये एक्स अननोन है और दूसरा यहाँ पे ये वाई की वैल्यू अननोन है। ठीक है जी। अच्छा, पहला स्टेप अगेन, point A is point P, point B is point Q and point C is point R। तो अगर मेरा एंगल A पॉइंट पे 25 डिग्रीज है, तो if A is the same as P, so will my X also be a 25 degrees? So yes, we can say that angle X is equals to the same as angle CAB, which is a 25 degrees। तो ये मेरा एंगल x तो फर्स्ट अननोन आ गया। अब हमें चाहिए y सेंटीमीटर। y सेंटीमीटर के लिए हम लोग रेशोज कंपेयर करेंगे, क्योंकि साइड्स के लिए हमें रेशोज चाहिए होता है। तो हमारे रेशोज बनेंगे, साइड ए बी इज द सेम एज साइड पी क्यू। ये कैसे बनाती हूँ मैं पता है, ये देखो, ये ए बी है पहले दो, ये पी क्यू है पहले दो। सेकेंड वाले में मैं लेती हूँ ये बी सी और ये क्यू आर, तो ये आ जाएगा बी सी ओवर क्यू आर। फिर थर्ड वाले में मैं फर्स्ट एंड थर्ड ए सी ओवर पी आर, ये मेरा थर्ड रेशो आ जाता है। ठीक है, अब इनको सॉल्व करने के लिए ए बी की लेंथ 7.5 है अपॉन पी क्यू की लेंथ 5 है, इक्वल्स बी सी की लेंथ इज y अपॉन क्यू आर की लेंथ है 3.2। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास ए सी विच इज दिस वन एंड पी आर हमारे पास गिवन नहीं है एंड वी डोंट इवन नीड इट, हमारा रेशो यहाँ पे बन गया है। इफ यू सी, हम इसको बहुत इजीली क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। हेंस वी कैन सिंपली स्टॉप हियर एंड नॉट राइट द थर्ड रेशो राइट नाउ, वील जस्ट मल्टीप्लाई दिस। 5 मल्टीप्लाई बाय y हो जाएगा एंड 7.5 मल्टीप्लाई बाय 3.2। Now your y will be equals to, जब I multiply 7.5 and 3.2, the answer that I get is going to be 5 multiplied by 3.2 gives me a 24, and now 24 divided by ये जो 5 यहाँ multiply हो रहा था यहाँ चला गया, hence my y is equals to 4.8 centimeters। So this is what my answer is। All right, let's move on to the next one now। अगर नहीं समझ आया हो दिस क्वेश्चन तो प्लीज गो बैक, लुक एट इट अगेन, ओके, डोंट मूव अहेड विदाउट अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट क्वेश्चंस। All right, now in this question the question is saying, given that triangle XYZ is the same as triangle XPQ, which means ये जो x का पॉइंट है ना, ये बेसिकली शेयर हो रहा है इधर। ठीक है, now we'll see what to do। Calculate the values of the unknown। values of the unknown, एक ये b unknown है, एक ये एंगल a unknown है। First step, we need to know that angle point x is the same as point x, point y is the same as point p, and point z is the same as point q। So if y is the same as p, तो अगर y 70 degrees है तो ये एंगल p पर भी 70 डिग्री आएगा। एंगल A is equals to the same as angle X
YZ which is hence equals 70 degrees. तो एक अननोन तो हमें ऐसे ही मिल जाता है। एंगल अननोन ढूंढना बड़ा इजी होता है पता है। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट दिस B, तो इसके अंदर हम वही रेशियोज वाला मेथड यूज करेंगे। ऑलराइट, द फर्स्ट रेशियो विल बी XY upon XP equals YZ upon PQ equals XZ upon XQ. अच्छा जी, XY we can see is 2 centimeters upon XP. XP का मतलब है X से लेकर P तक, तो which means 4 and 2 together 6 हो जाएगा equals YZ which means ये वाला हमें नहीं पता, हमें इसकी भी ज़रूरत भी नहीं है, so maybe just leave it। यहाँ पे आ जाओ, XZ, X and Z is 3 and XQ ये मतलब X and Q ये पूरा हमें नहीं पता, तो ये मेरा फिलहाल क्वेश्चन मार्क है XQ। अब हम इन दोनों को बड़ी इजीली क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बीच का इसके अंदर हमें रेशियो नहीं पता था, तो बिकॉज इट इज़ नॉट माई कंसर्न आई एम नॉट ऑल्सो गोइंग टू waste my time looking for it. So 2 multiplied by XQ is going to be 3 multiplied by 6। XQ की लेंथ आ जाएगी 3 into 6 is an 18 upon 2 which gives you 9 centimeters। लेकिन ये हमारा X से लेकर Q तक पूरा है 9 सेंटीमीटर, मुझे सिर्फ B चाहिए। Is my B equals to 9 minus this 3? Hence, I can say that the B is 6 centimeters. That is it. So you see, congruence and similarity itself कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल टॉपिक है नहीं, बस उनके रूल्स को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लो और उसके बाद रेशोज को कंपेयर करते हुए गो स्लो, गो स्टेडी, गो स्टेप बाय स्टेप, तो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगा। अगेन कोई और टॉपिक है जो नहीं समझ आ रहा, वांट मी टू एक्सप्लेन, you're most welcome to watch and most welcome to tell me. Thank you so much. Bye bye. Take care. Have a good day.